Okay, so the demonstration is about if you have a CPU, if this CPU is connected to the computer, how will you come to know that the CPU is recognized by the computer? Otherwise, then how will you transfer the program? Right? So what is the problem here? I mean, first problem. I start with complex thing, then we'll go for simple thing. Complex thing is here, this microcontroller, for that matter, most of the microcontrollers doesn't have USB inbuilt. Generally, microcontrollers doesn't have USB inbuilt. But I want to connect it to USB of the computer because computer को USB के बिना और कोई चीज नहीं है connect करने के लिए. So that's the problem. Okay. So what I require is a bridge, this green color box. That is called converter. There's a bridge. Remember, almost all microcontrollers are using the bridge. Okay, including your pen drive. Pen drive also uses a bridge. Anything you connected to USB, it uses a bridge. Okay. USB is a communication protocol. It has its own standard. But the CPUs which we are using, they have a different communication protocol. They have their own standard. Definitely, they do not have USB. Definitely, 90% they do not have USB. They don't understand this USB. If you are transferring, they don't understand. Including pen drive. Pen drive has a flash memory. It doesn't understand what is USB. Your mouse, it is some inside. There's a sensor, but it doesn't understand USB. So USB is a communication protocol. So what we require is, since microcontroller also doesn't have USB interface, we require an additional chip. एक IC चाहिए हमें जो आपको अनडाउटेडली अगर USB से कम्युनिकेट करना है तो आपको ये सोल्डर करना पड़ेगा, तब जाके ये CPU ये कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करेगा. अदरवाइज नो. इट हैज अ ISP इनबिल्ट, वो है, but this ISP is not compatible to your USB. That is the problem. And USB itself is a controller. It occupies a lot of space. इसलिए वो लोग माइक्रो कंट्रोलर के अंदर नहीं डालते वो लोग, या पेन ड्राइव में भी नहीं डालते वो लोग. It occupies a lot of space. It's a controller, USB controller. तो फिर वो बोलते हैं कि भाई आप सेपरेट चिप खरीद लो USB का. कंप्यूटर में भी ऐसे ही रहता है. इसलिए कंप्यूटर पे आपका USB खराब हो गया, इसका डजंट मीन दैट कि CPU खराब हो गया. कंप्यूटर फिर भी चलता है, USB खराब हो गया तो. So it's a peripheral. USB is a peripheral. It's a separate IC. और USB is a world standard है वो. पहले नहीं था. Last 15-20 years में USB has become a standard. पहले USB कहाँ था? हम लोग 90s में कोई USB है ही नहीं. So धीरे धीरे वो पिकअप किया. बट माइक्रो कंट्रोलर में या पुराना कंप्यूटर्स में, 90s का कंप्यूटर्स में कौन सा कम्युनिकेशन था? RS-232, सीरियल कम्युनिकेशन. RS-232 ये भी सीरियली है USB, बट दैट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड RS-232 कॉम पोर्ट. वो था स्टैंडर्ड. पिछले 40-50 साल से RS-232 इज अ स्टैंडर्ड. आज भी माइक्रो कंट्रोलर्स में RS-232 अवेलेबल है. कॉम पोर्ट RS-232 इज अवेलेबल. बट कंप्यूटर इंडस्ट्री ने क्या डिसाइड किया 2000 के बाद? यार हमें नहीं चाहिए. सो 2000 के बाद, ठीक है, जो भी धीरे धीरे हर 2-3 साल के बाद धीरे 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 सब लोगों ने डिसकंटिन्यू किया कंप्यूटर्स पे. और कौन सा अडॉप्ट किया? USB को अडॉप्ट किया. तो इसीलिए लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स में आपको ओनली USB आता है, बट RS-232 नहीं आता.
But however, 95% of the microcontrollers have RS-232, not USB. अब इन दोनों का मैच करवाना है। मैच करना है तो ये दिस इज स्पीकिंग इन RS-232, दिस इज स्पीकिंग USB। ये चाइनीज में बोल रहा है, ये जापानीज में बोल रहा है। अब इन दोनों को बीच में ट्रांसलेटर चाहिए। अंडरस्टूड? सो दिस फेलो FT232 या और भी चिप्स मिलते हैं, CH340 लाइक दैट, मार्केट में कुछ ऐसे मिलते हैं जो ट्रांसलेटर है, वन प्रोटोकॉल को अदर प्रोटोकॉल में कन्वर्ट करके देता है। सो अनडाउटेडली अपना एंटायर कोर्स में आप जितना भी माइक्रो कंट्रोलर्स यूज करो, आर्डिनो यूज, सॉरी ESP32 यूज करो, नोड MC यूज करो, या अभी मैं आपको और एक दिखाने वाला हूँ वो यूज करो, P को यूज करो, एनीथिंग यू यूज, you are first, you are connecting what? First you are connecting converter. Whenever you plug into computer, what you are connecting is a converter first. Where converter is connected to controller next. Okay, so that is why हम पहले, if I connect this board to my computer, मुझे पहले ये देखना है मेरा converter जो है, whether my computer has recognized or not. Why it won't recognize? Because naturally that is not manufactured by Microsoft. ठीक है, वो थर्ड पार्टी सॉल्यूशन है, कोई चाइनीज का, कोई कोरियंस का, सम अदर कंपनीज। इफ इट इज ए माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोडक्ट, फिर वो क्या करता है, ऑपरेटिंग के सिस्टम के साथ ही देता है। जैसा अभी ये जो लेनोवो वगैरह जो माउस वगैरह बनता है, उसके लिए आपको सेपरेटली ड्राइवर डालने की जरूरत नहीं, वो कनेक्ट करते हैं, वो ये भी यूएसबी है, बट ये भी यूएसबी है, लेकिन ये रिकॉग्नाइज नहीं करता, ये करता है, क्योंकि ऑपरेटिंग के सिस्टम के साथ ही इनबिल्ट ड्राइवर आया, इसका वो लोग नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं? पैसा चाहिए। इफ यू पे मनी देन ओएस के साथ, दैट्स द प्रॉब्लम। तो अभी अपने लिए सॉल्यूशन क्या है? एक्सटर्नली ड्राइवर डालना, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। सो व्हेनेवर यू हैव सच काइंड ऑफ ए डिवाइसेस, whenever you connect them, and if they are not part of the operating system, right, such kind of device, usko kya bolte hain, device drivers. So such kind of device drivers, you have to install them externally. Okay, so there are two types of device drivers: installable device drivers and default device drivers. Default device drivers means OS के साथ आते हैं, जैसे ही आपने OS इंस्टॉल किया और डिफॉल्ट भी इंस्टॉल हो गया, तब मतलब आप माउस सब ऑटोमेटिकली। इंस्टॉलेबल मीन्स वो नहीं है उसके अंदर, फिर आपको नेट के थ्रू, पेन ड्राइव के थ्रू, CD के थ्रू, व्हाटएवर यू हैव टू इंस्टॉल। हाउएवर एक बार इंस्टॉल कर दिया, फिर बार बार करने का जरूरत, फिर नेक्स्ट टाइम व्हेन यू बूट द ऑपरेटिंग सिस्टम, वो है ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया। ठीक है, so that's the difference between default and installable device driver. What do you mean by device driver? What is the role of a device driver? It's a piece of code. It's a piece of code. It is a software which bridge between two hardwares. Okay. Why it is different? Why it is different? For example, USB में मेरा पेन ड्राइव डिटेक्ट हो रहा है, मेरा माउस डिटेक्ट हो रहा है, मेरा प्रिंटर डिटेक्ट हो रहा है, लेकिन मेरा ये जो मैंने एक USB का लाया कन्वर्टर, ये डिटेक्ट नहीं हो रहा। क्यों? ये भी USB है, नहीं हो, क्यों नहीं होता है? सबका डिवाइस ड्राइवर अलग है। माउस का डिवाइस ड्राइवर का, प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर का सेम नहीं है। एवरी डिवाइस ड्राइवर इज डिफरेंट, दो USB is same. What I said, it is a bridge between two hardwares. What is two hardware? एक जो है कंप्यूटर का USB, बट दूसरा USB के अदर एंड क्या कनेक्टेड है? प्रिंटर है, माउस है, पेन ड्राइव है, मोबाइल है, या कुछ, so many things are. तो सबका सॉफ्टवेयर सेम नहीं हो सकता, दोनों USB। Understood? Because your peripheral is not same, so you have to have a डिवाइस। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड है, मेरे पास USB कीबोर्ड भी है,
USB माउस है, बट दोनों डिफरेंट है, सो सॉफ्टवेयर सेम नहीं हो सकते, इट्स डिफरेंट. So that's why you must install a device driver, though you are using the same USB. Okay, so that's the problem you will always face. So अभी मैं आपको issue करके देता हूँ. When you go home or laboratory में भी, if you connect it, पहले चीज आपको ये देखना पड़ेगा, when you connect it, पहले कंप्यूटर रिकॉग्नाइज कर रहा है या नहीं कर रहा. कंप्यूटर मीन्स हु? ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स कौन? इधर लिनक्स और विंडोज. जनरली आप मैक यूज किया तो आप मैक. सो यू फाइंड आउट फर्स्ट दीज थ्री व्हेन यू कनेक्ट इट, ओएस इज रिकॉग्नाइजिंग और नॉट. ठीक है, अभी आपको मैं कनेक्ट करके दिखाता हूँ. ओके, सो आई एम यूजिंग सम दैट माय ब्रिज. ठीक है, दैट okay, connected. Now I would like to see OS has recognized or not. So ये कहाँ होता है OS में? कहाँ चेक करना चाहिए हम लोग? विंडोज में कहाँ चेक करते हैं हम लोग? Yeah, device manager. So you should always go and check. यार मेरा कुछ हो गया गड़बड़. Oh, okay. All right. So there is a device manager. You should always go to the device manager. Now you can see it is indicating something here. USB, ASP, something is connected. ठीक है? It is connected. Something is. अभी मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ. अब देखो वो गायब हो गया. Okay. So that is what you have to verify first. Whenever you connect it, first your device is recognized or not. अगर नहीं है, I will give some software. फिर you have to install it. या अपने इंटरनेट से करो, whatever करो. पहले that is called preparation of your computer to recognize your SBC. Where SBC means controller बाद में, पहले bridge है इसका दोनों का बीच में. तो पहले bridge को device manager आपको डिवाइस ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा. ओके, सो नाउ इट इज रिकॉग्नाइज्ड. अंडरस्टूड? दैट इज द फर्स्ट पार्ट. सेकंड इज व्हाट आई टोल्ड यू इज, आपको मैं पहले आर्डिनो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको एम्बेडेड सी का एग्जांपल बताता हूँ. टिपिकल एम्बेडेड सी. एवरी प्रोग्रामर, इफ यू आर ए गुड प्रोग्रामर, देन लाइक इफ यू लाइक नो सिंस several years I worked at IIT Bombay, so I know what is expected from a computer science or electronics and telecommunication students as compared to mechanical civil students. Okay, for a mechanical civil or metallurgy, production, chemical, biomedical, वो students say absolutely there is no comparison to these three branches. Which three? Electrical, telecommunication and computer science. Because these three comes under one department. In सबका एक ही branch रहता है. Even foreign university में they all comes under electrical. Even computer science, telecommunication, electrical, in सबका एक ही mother है branch electrical. ये students का expectations industry में भी और academics में भी expectations are different. In terms of everything, either software or hardware. एक mechanical or other branches students, if they are doing this kind of a work, we don't expect them to, we are happy if they do it, but then when they have not studied to the depth of the CPUs and their architecture, so generally we don't expect them to go to the root level of coding. Okay, so for them it's okay even if they use like compilers, high level compilers or MATLAB, GUI based, they want to quickly develop the code. But however, particularly computer science, electronics, electrical students, are not supposed to use
those fancy type of a compilers, because that will spoil your coding skills. Okay? We actually encourage you to use as many as open source tools rather than the commercial tools. क्योंकि जितना आप कमर्शियल यूज करेगा उतना आपको हैंडीकैप्ड बना देगा, सब रेडीमेड नो सब. बट इन रियलिटी में दैट मीन्स आपको पहले से मदद मिल रहा है, आप खुद हर चीज नहीं कर रहे हो, आप यू आर लुकिंग फॉर सम हेल्प. विदाउट हेल्प इफ यू आर डूइंग, दैट मीन्स यू आर ए गुड कोडर. So that's why I wish that we will teach you all three: embedded C also, Arduino also, and Python also, and some extent Java also. But I am saying, don't worry. आपको तो अभी फर्स्ट ईयर पे है, अभी ये तो अपना सेकंड सेशन ही है, अभी से ज्यादा टेंशन मत लो. यू हैव एनफ टाइम टू अंडरस्टैंड, डू द थिंग्स, धीरे धीरे हो जाएगा आपको. एक्चुअली दीज थिंग्स वी टीच इट at industry level. जैसा embedded C, I used to teach L&T and Siemens for industrial people. But when they join industry, there is something called induction programs, corporate training. So several years I was doing for Siemens, L&T people. But लेकिन वो धीरे धीरे अभी वो लोग बंद किया, अभी they are not doing that, क्योंकि उतना bandwidth नहीं है, because of two reasons. One, एक जो है, एक टाइम ऐसा था कि भाई इंडस्ट्री मीन्स फर्स्ट 6 months इज ए कॉर्पोरेट ट्रेनिंग. दे आर नॉट डायरेक्टली पुटिंग ऑन द जॉब्स. दे लाइक नो दे हैव हेड ऑफिसेस, लाइक इन्फोसिस का मैसूर पे है, सीमेंस का कारगर पे, L&T का भी मापे पे. दे वर डूइंग 3 months to 6 months ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर ऑल द एम्प्लॉयज. दैट इज हाउ इट यूज्ड टू बी. बट अभी नहीं कर रहे. वन इज मे बी इतना अभी टाइट चल रहा है इंडस्ट्री पे, सो दे एक्सपेक्ट कि स्टूडेंट्स आर, इसलिए दैट कॉर्पोरेट कनेक्ट, मतलब दे एक्सपेक्ट कि पहले से होना चाहिए, 4 साल पे आप लोग करके आ जाओ, यू शुड बी रेडी, डायरेक्टली रेडी फॉर द इंडस्ट्री. दैट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस दे आर हैविंग. मे बी इतना मार्जिन भी नहीं रहा, कॉम्पिटिटिव है थोड़ा मार्केट में, दैट्स व्हाई दे आर नॉट डूइंग. अभी भी करता है तो वो लोग जनरली दे डू इट फॉर ए स्पेशलाइज्ड टॉपिक पे करते, नॉट ए जनरल ट्रेनिंग नहीं करते. ओके, सो दैट्स द रीजन व्हाई आई एम सेइंग इट टाइम विल कम वेयर you have to do it in embedded C. If you go to the developing stage, not that initial stage. Okay. Well, so fine. So we have connected a USB programmer. It has recognized. Now, how will I write a program and download a program? Okay. This I will explain you maybe after 1 or 2 months later. I will just only demonstrate you today how this happens. Okay. I'm using one compiler, which is it is freely available, evaluation copy for students. Let's say Code Vision compiler. Okay. Now you look at how the program looks like, typical C language. But then most of these lines you don't understand, because for example, what do you mean by include 32? You don't understand. This is not there in normal C. Okay. Or what do you mean by port C? You don't understand. What you understand is, like, say, for example, this for loops, condition, like that. That you will also learn this semester. But here, 30% of the code you don't understand, because that is called embedded C. That I will going to teach you slowly. Okay. I will open one example. Okay. A simple program, hardly
how many? 4 lines of code. It's a C program, but however, it is embedded C. What is embedded C here? Though it is a like the way you write in C, void main, you are starting beginning of the program. But then after your opening bracket, you said DDR D.7 is equal to 0x1. A little bit complicated thing. ये क्या है? DDR D क्या है? D.7 क्या है? What is 0x1 क्या है? That I need to teach you. ठीक है? Something that some official language. Then while तो you understand infinite loop. Infinite में आने के बाद वापस हमने इस बार पोर्ट, व्हाट इज पोर्ट D.7 समथिंग है कीबोर्ड. अगेन इट्स नॉट देयर इन नॉर्मल सी. वापस इसको लिखा था मैंने 1 लिखा था. डिले तो आप समझ सकते हैं भाई, सो जाओ थोड़ी देर. कितने देर सोना है? मिली सेकंड्स में सोना है, इसलिए MS लिखा है, मिली सेकंड में सो जाओ. और कितने देर? 100 मिली सेकंड सो जाओ. ओके. फिर D.7 को हमने बोला भाई इस बार तुम 1 नहीं है, तुम इस बार 0 है. तो आई सेड यू आर 0 नो. वापस हमने बोला भाई सो जाओ थोड़ी देर. फिर इनफाइनाइट लूप है, व्हाइल 1 अनकंडीशनल लूप है. इस एंटायर प्रोग्राम में एक चीज आप समझ सकते हैं, मैं बार बार D.7 को ही हिट कर रहा हूं. ओके. D.7 भाई बोल, थोड़ी देर बोल रहा हूं भाई तुम 1 है, बार बोल रहा है नहीं तुम 0 है. ऐसा ना, ओनली वन एक ही बिट को मैं हाई लो कर. और हाई और लो का बीच में डिले भी दे रहा हूं भाई. हाई लो फिर हाई लो. ठीक, अंडरस्टैंड? इतना ही प्रोग्राम हमने लिखा है. ओके, वी विल डिस्कस मोर अबाउट इट, डोंट वरी. अब ये प्रोग्राम मुझे यहां तो नहीं चलेगा. ये प्रोग्राम क्यों नहीं चलेगा? ये प्रोग्राम किसके लिए लिखा था हम लोग? एटमेगा 32 के लिए लिखा था. 32 तो इसमें नहीं है, तो ये तो i3 है, so that CPU is not there. तो ये प्रोग्राम इस पे चलेगा. लेकिन what I told you is you can type the program, you can also compile the program, you cannot run the program. तो अभी मैं कंपाइल करता हूँ इसको. मैंने अभी कंपाइल किया. तो कंपाइल किया तो यू सी स्क्रीन के ऊपर क्या दिखा रहे हो भाई? कोई एरर्स नहीं आपका प्रोग्राम में. मैंने कंपाइल कर दिया. और ये छोटा सा प्रोग्राम के लिए वो कितना था, वो मेमोरी खा लिया उसने. देखो अब ये क्या बोल रहा है कि भाई 730 लाइंस. देखो 730 लाइंस उसने कंपाइल किया, बट आपका तो 4 लाइन का कोड है. ठीक है. और वो बोल रहे कि 97 आपका प्रोग्राम का साइज है, 194 बाइट्स है. ठीक है. You have consumed 194 bytes. प्रोग्राम कितना था? हार्डली 4 लाइन्स का कोड है. 194 बाइट्स आपने ले लिया. अंडरस्टूड? सो दिस इज नॉट ए ऑप्टिमाइज्ड कोड, बट ये ऐसे ही होता है. फिर भी सी है करके फिर भी इतना कम है. ये यही आप कोई दूसरा लैंग्वेज पे लिखो और ज्यादा हो जाएगा. वट एवर. अंडरस्टूड? सो ओके, वी हैव कंपाइल्ड. व्हेन यू कंपाइल, it creates one output file. That file is there right now in the computer, but मुझे अब ये IC में लोड करना है. So now I am connecting this board. So मैं एटलीस्ट एक इंडिकेटर रखा है, कनेक्ट किया तो मैं ऑन कर. That means this LED is connected to USB power. USB power means USB से कितना वोल्टेज आता है? 5 volts. So every USB will give you 5 volts. कितना करंट देता है USB? 500 मिली एम्पियर्स, मतलब हाफ ए एम्पियर. मतलब आप कुछ भी इसके ऊपर कोई भी माउंट करो, बट मेक श्योर डू नॉट ड्रॉ मोर देन हाफ ए एम्पियर ऑफ करंट. अगर वो जैसे आपने एक्सीड किया तो आपको कंप्यूटर में ऊपर कभी कभी वो फ्लैश आता रहता है, भाई आप लोड कर रहे हैं USB को, USB शॉर्ट हो रहा है, USB डैमेज हो रहा है, ऐसा आपको मैसेज आएगा. अगर वो आप निकाला नहीं है तो USB खराब हो जाएगा. प्रोटेक्शन भी रहता है, वो क्या करता है, शट डाउन कर देता है, समथिंग लाइक दैट. बट वट एवर, सो दिस USB इज कनेक्टेड. नाउ माई माइक्रो कंट्रोलर में फ्लैश मेमोरी है
ये प्रोग्राम को वो फ्लैश मेमोरी में ट्रांसफर कर. अंडरस्टूड? बट देन हाउ दिस विल एक्सेप्ट द प्रोग्राम? क्योंकि इसमें पहले से आईएसपी प्रोग्राम है जो फैक्ट्री प्रोग्राम है, इसलिए वो एक्सेप्ट करता है आप जो भी दे रहे हैं. अंडरस्टूड? सो वी विल सी वेदर इट ट्रांस. बट मेरा कंपाइलर का रोल खत्म हो गया. ये खाली आपको कंपाइल करके दे रहा है. कुछ सिंटैक्स एरर है, समझो. व्हाट इज सिंटैक्स एरर? फॉर एग्जांपल मैं कुछ हटा दूं क्या? देखता हूँ डिटेक्ट करता है कि एक एरर आ गया. ठीक है, तो जब तक वो एरर आप नहीं निकालोगे वो आपका प्रोग्राम बिल्ट नहीं होगा. ठीक है, सो वो सिंटैक्स एरर है. व्हाट इज लॉजिकल एरर? लॉजिकल एरर मीन्स डी के जगह मैं ए दिया, समझो. ठीक है, अब मैं कंपाइल करता हूं, कोई एरर नहीं है, क्योंकि उसको ए भी चलता है, बी भी चलता है, सी भी चलता है, डी भी चलता है, उसमें है. बट आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, बट कंपाइल होगा. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन सिंटैक्स एरर एंड लॉजिकल एरर. Okay, so whenever you modify the program, make sure you have compiled. Now I want to transfer this program to the flash memory of this. So there is a software, some open source software freely available. We are using that because as I said, हमें कोई commercial चीज use नहीं करना है. So that software is called Session-4. किसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट ने लिखा था ये. It is freely available on the public domain. Okay. So Session-4 is a software which transfers the program from the computer to the flash memory of the CPU. उसने सारे CPUs का नहीं लिखा था, उसने इतना CPUs का लिखा था. इतना HTML का इतना कुछ सीरीज है, तो we are using that. Okay. Now इस software when you connect it, first thing is whether this software recognizes this board or not, we say search. देखो वो इधर डिस्प्ले कर रहा है कि सर्चिंग इज ओके, और सीपीयू का नंबर भी उसने दिया. ओके, इट रिकॉग्नाइजेस. नाउ आई वांट टू लोड दैट प्रोग्राम. तो आपका जो भी प्रोग्राम है, आपने जो भी कंपाइल किया, दैट प्रोग्राम हैज टू बी इन, आप देख सकते हो, एक्स फाइल. जो I was telling in the morning session, it is not exe or com file, it is hex file. Okay, now I will say program what? Flash. Okay, so now see this LED is blinking. On 100 milliseconds, off 100 milliseconds, on loop mein. So you have written a simple embedded C program, you have compiled, you have created hexa file, you have transferred that file from the computer to the target device, and the target device is at mega 32, and it's loaded into the flash memory. जैसे आपने लोड किया, it started executing, because CPA का वही काम रहता है, लोड करो फिर it will start executing. Sir, that LED is directly connected to port 7. No, port D.7. I didn't teach you this subject because आज जो है मुझे ये बोर्ड नहीं पढ़ाना है. मैं आपको I want to teach you your ESP32. इसलिए now I am not explaining this circuit diagram, this layout, how this board is designed. तो थोड़ा हम लोग धीरे धीरे देखते हैं. और भी ऑनलाइन तो 1000 लोग रजिस्टर किया, अभी देखते हैं. ये ग्रुप भी फुल हो गया, तो वापस मैं क्रिएटेड अनदर ग्रुप. 1025 हो गया था, देन आई क्रिएटेड अनदर, उसमें भी 100 के ऊपर हो गया. बट आई नो रियलिटी में ऐसे ही रहता है, हाउ सीरियस वी आर. तो इसलिए थोड़ा धीरे से चलते. सो ये कॉम्प्लेक्स चीज जो है हम बाद में करेंगे. एक्चुअली हाउ दिस पीसीबी इज डिजाइन्ड, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, नो, हाउ टू प्लेस द कंपोनेंट्स एंड ऑल. इट्स अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. अंडरस्टूड द एंटायर फ्लो, एंटायर जर्नी. अब मुझे प्रोग्राम थोड़ा मॉडिफाई करना है. ठीक है, तो आपको वापस प्रोग्राम में जाना पड़ेगा. अब ये 1000 को मैं 100 को 1000 कर देता हूँ, मतलब अभी ऑन ऑफ ऐसा होना चाहिए ना. तो आप वापस कंपाइल करो, वापस प्रोग्राम कंपाइल हो गया, वापस सेना प्रो में जाओ,
वापस सर्च करो, इट इज सर्च्ड, देन इज ऑलरेडी सेलेक्टेड, यू से प्रोग्राम। नाउ अभी देखो एलईडी धीरे धीरे, सो दिस इज द जर्नी। अपना जर्नी जो है यही है, 1 साल का अपना जर्नी यही होने वाला है। ये बोर्ड, आपका बोर्ड जो भी है, आप घर पे कनेक्ट करो आपका कंप्यूटर को, प्रोग्राम लिखो, कंपाइल करो, फिजिकली देखो, नॉट ऑन कंप्यूटर, इसके ऊपर होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड रियल टाइम एमुलेशन, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एसबीसी। कंप्यूटर वो नहीं है, अपना कंप्यूटर ये है, सॉफ्टवेयर इधर है। और ये सॉफ्टवेयर किस लेवल तक जाना चाहिए? implementing the operating system, implementing the AI/ML algorithms on the device. जब वो करोगे, then I am telling you, maybe in your 3rd year or final year, you will publish the best papers in the world, best world class conferences. हो सकता है आपका पेटेंट भी हो जाएगा, कोई भी हो सकता है आपका, जैसा अपना टीबीआई जैसा एजेंसीज 5 to अभी भी दिया ना किसी को 5 lakhs, yesterday Talali was telling, they have received 5 lakhs. So you will get 5 to 10 lakhs for your ideas. Understood? Yes. That's what I want. That's the outcome. That's the expectations of this. Why we are doing this is because the best publications, best patents, और भी एक step हो सकता है आपका grant मिल जाए. As a student, I'm not talking about after pass out. After pass out, आज जाओ company start करो या whatever. That's a different thing. Or while doing job also, you can start a company. कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जॉब करो, योर सैलरी कुछ दिन चाहिए, ठीक है, जॉब करो, बट यू स्टार्ट ए कंपनी हियर ना, हु स्टॉप्ड यू? दैट्स द पर्पस ऑफ एलुमनी ना। एलुमनी मींस व्हाट? 1-2 जूनियर्स को पकड़ो, चलो यार तुम लोग को मैं स्टाइपेंड या कुछ नो ऐसा देता हूँ, इंटर्नशिप देता हूँ। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग ना। अभी आपको इंटर्नशिप चाहिए, कौन देना चाहिए? यू शुड अप्रोच योर सीनियर्स ना। एलुमनी को लिखो, यार मैं, मेरा इतना कैपेबिलिटीज है, कहता क्या इतना कमा रहे, थोड़ा डालो इधर आइडिया को, आइडिया, आपका आइडिया सक्सेस हो जाएगा। तो यही तो हुआ ना अभी, ये जितना भी अपना सक्सेसफुल एल्यूमिनी है कोई भी स्टार्टअप कंपनीज में, प्लीज रिमेंबर, पैसा मिलता है आइडिया को, ठीक है? वो जो शार्क टैंक है, वो लोग किसके लिए देते हैं पैसा? आइडिया को देते हैं। इसलिए आइडिया जो है वो दूसरों से डिस्कस नहीं करने का। अंडरस्टूड? बिकॉज वो हो सकता है वो आइडिया आपका $1 बिलियन आइडिया है ना। मैंने लाइफ में इतने सारे एग्जांपल्स देखा है, बट दिस इज द रियलिटी। जो एज ए इंडियंस हम लोग जो नहीं किया, अनफॉर्चुनेटली, इसलिए हम लोग पीछे पड़ गए जो डेवलप्ड है, जो 2-3 कंट्रीज में। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि अपने पास आइडिया नहीं है, हम नहीं कर सकते। अभी भी किया ना, हम ब्रिटेन को पीछे कर दिए। नाउ वी आर द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड इन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ, अभी 3 ही रह गए अपने ऊपर। बट हम कब का जा सकते थे, बट नो, हिस्टोरिकली हम लोग क्या था, पहले कुछ ऐसा ब्रिटिश रूल, स्लेव्स, ऐसा स्लेवरी, ये लोग अपने को खत्म किया अपना इकोनॉमी। तो उससे बाहर अब भी जस्ट वी आर कमिंग आउट ऑफ दैट, एंड वी हैव अ लार्ज पॉपुलेशन, देन वी हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स वी हैव टू डील। वहां से अदरवाइज इफ यू लुक एट 400 years बिफोर दिस एंटायर, दिस इन्वेडर्स वगैरह, पहले आप देखो, वी वर द 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स जीडीपी, हम लोग, राइट? मतलब एक टाइम ऐसा था कि जब अमेरिका का डॉलर जो है, मतलब उन लोग को $90 दिया तो अपने ₹1 मिलता था उन लोग। दैट वाज द रेशियो। वहां से लेके अभी व्हाटएवर, बट अगेन टाइम विल कम। सो ये सब क्यों डेवलप्ड है वो कंट्रीज? ओनली बिकॉज वो लोग क्या करते हैं, आइडिया को पेटेंट करते हैं। जो हमने आज तक अपना कल्चर पे नहीं है कि आइडियाज को छिपाओ, हम लोग क्या करते हैं, शेयर करते, डिस्कस करते, एक्सप्लेन करते। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, पेटेंट करते, छुपाते, फिर उसको बोलते तू कॉपी किया, तेरे को फाइन लगाऊंगा। ऐसा है। लेकिन हम लोग कैसे, अपना कल्चर कैसा था एक्चुअली, आवर इंडियन कल्चर क्या था? हाँ, लेट नोबल थॉट्स फ्रॉम एवरी साइड। इवन अभी G20 में भी अपना वही लोग है, जो भारतीय विद्या भवन का जो मोटो है, विल सरप्राइज टू सी G20 का में भी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वही रखा है, लेट नोबल थॉट्स फ्रॉम एवरी साइड, से फ्रॉम वेदास का, ऋग्वेदा का, सम दिस थिंग।
So that means we feel that it's not that you and I should benefit, the entire world benefit, entire humanity should. That's the historically Indian culture. अभी भी हम जो भी करते हैं, अभी हमने कोविड का वैक्सीन बनाया था, हमने ये नहीं बोला कि हमने खाली हम इंडियंस को दें, हमने तो पूरा वर्ल्ड को बांटा ना. एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ दिस इकोनॉमिकली वीक कंट्रीज को हमने मदद किया, नॉट दोज यूरोपियन कंट्रीज. फ्रीली हमने बांटा, ऑल अफ्रीकन कंट्रीज हो गए. अभी भी मोस्ट ऑफ द मेडिसिन जो है वो इंडिया से जाता है पूरा वर्ल्ड को, इकोनॉमिकली वीकर अफ्रीकन कंट्री सबको हम लोग सप्लाई करते हैं, बिकॉज हम लोग इतना सस्ते में जो सप्लाई करते हैं मेडिसिन. यूरोप में दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, हेल्थ केयर सेक्टर इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, बियॉन्ड अफोर्डेबल एक नॉर्मल आदमी, इसलिए वहां ज्यादा इंश्योरेंस सेक्टर काम करता है. इट्स लाइक दैट. Okay, understood? Okay, so this is like I am saying, this is the second stage of our coding club where we will be doing hardcore coding. मतलब आपको उस टाइम मैं समझाऊंगा तो आप बहुत ही कंफ्यूज होने वाला है, क्योंकि ये क्या सर, ये D.7 क्या है, ये क्या है, हम लोग कभी सुना नहीं देखा नहीं, ऐसा आपको सब प्रॉब्लम्स आने वाले. इसलिए अभी मैं स्टार्टिंग में वो नहीं पढ़ाऊंगा. पहले अभी मैं आपको जो बोर्ड्स अभी मैं देने वाला हूँ उसका एक एग्जांपल बताता हूँ, फिर देन आई विल स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग द बोर्ड्स. तो वो कंपाइलर है जो बच्चे लिखते हैं, यूज करते हैं, वो है आर्डिनो कंपाइलर. ठीक है, सो लेट्स यूज आर्डिनो कंपाइलर, जो स्कूल्स में भी यूज करते हैं. ये यूरोपियंस ने बनाया इसको, और स्कूल्स के लिए बनाया, बेसिकली एलिमेंट्री स्कूल्स के लिए बनाया. बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग इंजीनियरिंग में, इंडिया में इंजीनियरिंग में हम यूज कर. ठीक है, नहीं, ये फ्री है. फर्स्ट ऑफ ऑल आर्डिनो इज ए फ्री कंपाइलर, आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो. कोई, दैट्स व्हाट आई सेड, दिस एंटायर कोर्स इज, हमको कोई भी कमर्शियल चीज यूज नहीं करना है, सब फ्रीवेयर. ये लिनक्स में भी मिलता है आपको, विंडोज का भी मिलता है, मैक पीसी पे भी मिलता है. आर्डिनो कंपाइलर आप इंस्टॉल करो, खाली डबल डाउनलोड करना है, डबल क्लिक करना है, सबको एस करना है, डन. कोई और कुछ है ही नहीं इस पे. इंस्टॉलेशन मींस वेरी सिंपल. बस आपको ये फर्स्ट स्क्रीन आएगा आप जो देख रहे हो. ओके, सो क्विकली, अदरवाइज इसके ऊपर मुझे एक्चुअली एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, इतने सारे वीडियोस पड़े हैं इंटरनेट पे, आपको एनफ है, और टन्स ऑफ कंटेंट्स आते हैं. हाँ, अनफॉर्चुनेटली ये बहुत गलत काम कर रहे हैं. इवन मैंने सुना अटल का जो स्कूल्स का जो ये लोग सप्लाई कर रहे हैं, वो भी आर्डिनो बोर्ड सप्लाई. दैट्स द प्रॉब्लम ना. आवर सम पीपल, दे उनका वो है ही नहीं कि उसका रिपरकेशंस क्या होता है. अभी तो उससे भी छोटा है माइक्रोबिट. हाँ, माइक्रोबिट का, वो भी ब्रिटिशर्स का है वो. दैट्स द प्रॉब्लम. सी, इजी शॉर्टकट मेथड्स ये जो भी कर रहे हैं वो एक्चुअली इन लोगों को समझ में नहीं आता है, वो स्पॉइल करता है एजुकेशन को. इंडस्ट्री पे वो यूज नहीं होता है, फिर इंडस्ट्री में जो यूज नहीं होता है, फिर हम क्यों यूज करने का. थोड़ा टफ है, मेहनत है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम जल्दी क्यों खुश करना चाहते हो. अभी मैं आपको सबको बोलूंगा बर्गर खिलाऊंगा, सब खुश हो जाओ. ठीक है, मैं आपको बोलूंगा चपाती खिलाऊंगा, लेकिन हमें मालूम है चपाती हेल्दी है, नॉट बर्गर. वही पिज्जा बोलूंगा, सब खुश हो जाओगे. और वही अगर मैं कोई बोलूंगा पाव भाजी ना, बट पाव भाजी में भी आपको चाहिए बटर हो सब. अगेन वो प्रॉब्लमेटिक है. सी, अगर चलो आप घी डालो, अच्छा है, लेकिन आपको घी नहीं चाहिए. सो एनीथिंग प्रोसेस्ड, प्लीज अंडरस्टैंड, एनीथिंग प्रोसेस्ड, रिफाइंड और फिल्टर्ड इज एक्चुअली केमिकल्स. जो ऑल हेल्दी चीज आपने निकाल दिया, एंड ऑल ये जो टंग को जो आपका जो भी चाहिए ना, इधर का चाहिए, जो फ्लेवर इधर ही है, इधर का नहीं. That we are not understanding. So that is the reason why all this cancer, BP, sugar, all these things are happening, because market में जो भी मिलते हैं, these are all refined, filtered, processed food, which are tasty, ऐसा लगता है, but no proteins, no healthy, nothing. Slowly उसका effect, side effects जो है आपको for a longer period of time. Okay, नहीं. And but पहले जमाना जो अपना प्रीडिसर्स जो है, वो लोग को ये सब तो है ही नहीं था. प्रोसेस्ड फूड, राइट, व्हाटएवर दिस
प्रिजर्वेटिव्स डाल के पैकिंग, ऐसा कुछ नहीं था ना। जो मिला, बस जो गार्डन में वो लेके आओ, बनाओ, खाओ, बस, दैट्स ऑल। नो फ्रीज आल्सो, ठीक है, नो स्टोरेज आल्सो, ठीक। बट इतना करने के बाद भी एक एडवांटेज क्या होता है कि दे वर्क हार्ड, बिकॉज दे हैव टू वर्क हार्ड ना एवरी डे। उनको पानी भी कुआं से निकालना है, पानी भी आपको किसी दूर जाके 2-3 किलोमीटर से लेके आना है, या खेती जाना है, काम करना है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ, होल डे में एटलीस्ट 5 to 6 hours ऑफ अपना बॉडी का ऑल ऑर्गन्स, ऑल पार्ट्स को आपको यू आर मूविंग। बट अपना अभी लाइफ साइकिल क्या है, हम ये सभी नहीं है ना। अभी तो हम फैन भी ऑन करने के लिए उधर जाना नहीं चाहते हम उठना नहीं चाहते चेयर से ना। व्हाट इज हैपनिंग, आप जितना देर बैठा है, जितना देर इसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा, दैट मीन्स ऑल योर सेल्स आर बिकमिंग कैंसरस, दे आर डाइंग, दे आर डेड। सो दिस इज द प्रॉब्लम। जब आप कोई चीज यूज नहीं करते, वो स्लोली स्लोली, आपको मालूम है ना, एक जमाने में अपने को टेल था, अभी नहीं है, क्योंकि हम यूज करना बंद किया, इसलिए वो गायब हो गया। इट्स लाइक दैट, नो। सो व्हेन यू स्टॉप यूजिंग समथिंग, धीरे 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 वो खत्म हो जाता है। So like that, no. So similarly, if we stop using brain, then what you have, you started depending on the devices, no? Chat GPT, then your brain भी खत्म। लेकिन वही अगर आप ज्यादा स्ट्रेस करोगे, ज्यादा सोचोगे, दैट मीन्स व्हाट, आपका हर सेल के अंदर से ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, then you are more energetic or whatever. That's why we said, na, why we use those breathing exercises, yoga वगैरह, because unfortunately जो होना चाहिए वो नहीं हो, but at least वो करके आप at least know, make sure every part of the body में blood is flowing। और ब्लड के अंदर you should have a maximum oxygen होना चाहिए, right? Maximum oxygen कब होता है, जब आप ज्यादा ब्रीथ करोगे। बट वी आर नॉट ज्यादा ब्रीथ, हम हाफ ब्रीथ कर रहे हैं, क्वार्टर ब्रीथ कर रहे हैं, दैट्स व्हाई योर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है। जब ऑक्सीजन कम होता है, आपका एनर्जी लेवल डाउन होता है, दैट्स व्हाई यू शुड हैव मोर ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। देन एटलीस्ट एक हाफ एन आवर भी किया, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स होता है। व्हाट इज दैट पल्स ऑक्सीमीटर मेजर क्या करता है, व्हाट इज दैट इट इज डूइंग, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन योर ब्लड। मतलब कोविड पीरियड पे आप टेम्परेचर चेक किया तो भी पता नहीं चल रहा था कि भाई कोविड है कि। Then they realized कि there is another way of knowing, that is amount of oxygen in your blood is falling down because of the virus. So जैसे ही वो below 95%, below 90% का नीचे आता है, that means you are COVID affected, because you are not breathing which naturally you are supposed to breathe. So और जितना धीरे धीरे होता है तो मतलब आपका breathing भी कम होते है। That's the problem. So that's why it is anyhow. So what I am saying is, so these compilers and all, there are more and more communities, people are contributing, it's open source, so you will find lot of help online, it's good. So let quickly explain 5 minutes about this compiler. Actually it is a C compiler, मतलब अगर आपको C आता है, ये भी आता है, so there is nothing new here, but इसमें simplified क्या है, जो मैं आपको अभी बता रहा था, यार ये इनिशियलाइज करो, वो इनिशियलाइज करो, वो भी इधर करने का जरूरत नहीं। इसलिए और मतलब एम्बेडेड जो आपको एज ए इंजीनियर जो करना चाहिए था ना, वो इसमें वो है। इसलिए आई वाज टेलिंग ये स्कूल्स के लिए बनाए, मतलब जैसा ही वाज टेलिंग ना, दैट बिट, माइक्रो बिट वगैरह, ये यही है। ये सब कंपनीज जो है वो लोग स्कूल्स के लिए थोड़ा अट्रैक्टिव करने के लिए सब कर रहे हैं, लेकिन वो किसके लिए, वो थोड़ा लोगों को फूल, टू मेक देम फूल, जैसे इंटरनेशनल स्कूल्स, नो ऐसा। अब इंटरनेशनल स्कूल में क्या होता है, व्हाट इज द फीस, नॉट लेस देन 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख पर ईयर, मतलब इंजीनियरिंग से ज्यादा। अरे हम लोग इतना कंप्यूटर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैबोरेटरीज पे खर्च करते हैं, इसलिए इंजीनियरिंग में इतना खर्च है। स्कूल में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, खाली एक क्लासरूम है, लेकिन फिर भी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। सो दैट्स व्हाई व्हाट डू दे डू, फिर ठीक है भाई, उनको अट्रैक्ट करना है तो ऐसे ही कुछ उल्लू बनाने वाला हार्डवेयर लेके आता है, ओह देखो कैसा होगा
फिर हाँ रोबोट बना, तो बच्चा मैंने रोबोट बना क्या, मैंने इसको गाड़ी चलाया, अरे क्या चलाया, वो तो खाली उसका थोड़ा ऐसे फैंसी चीज करके है। These are all doing this in Harvard College last month. So exactly. they called us by IEEE. So they were teaching that microbit. हाँ. और हम लोग गए थे कि कुछ सीखने मिलेगा। और वो they were telling, drag this, drop here. The light will glow. See the heart shape is coming. So like this. So फिर क्या होता है, फिर वो बच्चा इंजीनियरिंग में आके भी इसको वैसे ही लगेगा कि एलईडी ऑन करने मतलब ड्रैग करो ड्रॉप करो एलईडी ऑन, है ना। सो इसीलिए सिंपल थिंग्स जो है ना वो अच्छा नहीं है, वो एक्चुअली वी शुड रियलाइज दैट। ओके फाइन, एनीहाउ, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट दिस program style in Arduino. ठीक है, I don't teach beyond that. I will teach you this Arduino slowly because आज जो है इतना enough है. So today what I am saying is that how this compiler works. The moment if you install it, आपको ये screen मिलेगा. अगर ये screen नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, go to file, ठीक है, और यहाँ जाके new, तो देखो वही screen मिलेगा. So whenever you say file new, you will get this screen. That is called creation of a project. So you have created a project. इसमें that is called sketch. In Arduino, creation of a project is nothing but वो एक नाम देता है, that is called sketch. You have created a sketch. Sketch consists of बस दो ही लाइन कोड आपको बना के देता है, एक है void setup और दूसरा जो है void loop. दो functions आपको create करके देता है, बस that's all. That's the role of Arduino. बाकी आप जो भी लिखोगे वो आपका मर्जी, ठीक है। बट आई एम टेलिंग यू, आपको एटलीस्ट अनदर 1 month 1.5 months जो है इसी पे आपको लिखना है, बट नथिंग टू डू विद द हार्डवेयर. However, you are running the programs on the hardware, but it's nothing to do with the hardware. So what will you write here is all about your physics, maths, chemistry. जो भी है आप इधर लिखो, not theory, equations. You write mathematical expressions. For example, that physics का कुछ laws है, Newton's laws, whatever, thermodynamics है, या कुछ mathematics है, trigonometric है, numeric, whatever the mathematics आप लिखो इधर, और आप देखो कंपाइल करके पहले सिंटैक्स एरर आप निकाला कि नहीं, देखो, बस वो पहला आपका अचीवमेंट है. यू आर राइटिंग ऑल मैथमेटिक्स बट आपका प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, दैट्स अचीवमेंट, ठीक है, यही आपको करना है. बट देन व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस एंड दिस? whatever you write in setup, whatever you write between these two brackets in setup, it will execute only once. जैसा इधर लिखा है, whatever you write will be executed only once, and whatever you write in the loop will be executed infinite number of times. Now आप decide करो आपको फिर इस पे क्या लिखना है, इस पे क्या. Understood? आपका मर्जी, इस पे आप क्या लिखोगे सेटअप में? मीन्स व्हाट? इनिशियलाइजेशन मीन्स व्हाट? क्योंकि इनिशियलाइजेशन एक ही बार करते हैं हम लोग, क्या इनिशियलाइज करोगे? ऑल वेरिएबल्स. आपको प्रोग्राम के अंदर जितना भी वेरिएबल्स चाहिए एक ही बार इनिशियलाइज करना है ना, बार बार तो जरूरत नहीं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ डेटा टाइप्स चाहिए, कुछ नो, या लाइक शी सेड मुझे एक पिन चाहिए, तो पिन आउटपुट है इनपुट है एक ही बार डिफाइन करते हो ना. ऐसा नहीं होगा कि एलईडी इंस्टा ऑफ आउटपुट सडनली इनपुट बनेगा, ऐसा नहीं होगा ना. एलईडी तो हमेशा आउटपुट है, तो पहले ही लिखो भाई एलईडी तो आउटपुट है, ठीक है. स्विच है भाई तो हमेशा इनपुट है, तो लिख देने का ना. लेकिन जो बदलता है बार बार वो इधर नहीं लिख सकते, वो उसको इधर लिखना पड़ेगा, क्योंकि कभी तो हाँ कभी ना, सो बदलना पड़ेगा. बट लाइफ लॉन्ग जो एक ही बार है वो इधर लिखना. ओके, सो आई विल शो यू वन एग्जाम्पल. इसमें काफी सारे एग्जाम्पल्स है. द मोमेंट यू इंस्टॉल, एक एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल है, फाइल एग्जाम्पल्स. देखो कितने सारे एग्जाम्पल्स सुने दिए, तो बेसिक एग्जाम्पल्स पे ले लो. पहले एक सिंपल एग्जाम्पल ब्लिंक, ठीक है. अब ये एग्जाम्पल जो है मैं कमेंट्स हटा देता हूं आपको, फिर यू विल कम टू नो. छोटा सा प्रोग्राम,
बस इतना ही प्रोग्राम। सो व्हाट इज दिस प्रोग्राम? जो मैं आपको दिखाया था वही प्रोग्राम है। मैं आपको एटमेगा 32 में क्या बोला था, पिन, एक पिन है, उसको मैंने लिखा था DDR D.7 बाई तुम 1 है। फिर उसके बाद एक इनफाइनाइट लूप में, वाइल लूप में मैं क्या लिखा था भाई, पोर्ट D.7, एक बार तो है एक बार लो, बीच में डिले। ये भी वही है, बट हावेवर ये प्रोग्राम देख के आपको बहुत आनंद लग रहा होगा, क्योंकि इसमें D.7 तो नहीं है, पोर्ट डी नहीं है। इधर आपने क्या लिखा, LED ऑन या नो, देखो LED बिल्ट इन हाई, LED बिल्ट इन लो, मतलब जो बिल्ट इन LED बोल रहा है भाई, कभी हाई कभी लो। आपको लैंग्वेज अच्छा लग रहा है, तो ये इसलिए बोल रहे हैं, हम लोग बच्चों का लैंग्वेज है, मतलब हाई लो ऐसा, LED ऐसा। आपको कुछ भी हार्डवेयर रिलेटेड चीज हम इधर बता ही नहीं रहे, उसका नॉलेज का जरूरत भी नहीं। बट ये ट्रू नहीं है। ट्रू क्यों नहीं है? भले आपने यहां लिखा होगा, लेकिन ये बैक एंड में वो मैपिंग कर रहा है। अगर मैपिंग नहीं किया तो चलेगा कैसा? इट हैज टू डू दैट। अंडरस्टूड? सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वर्चुअलिटी। मीन्स आपको जो दिख रहा है वो सच नहीं है, बैक एंड में वो मैपिंग कर रहा है। ठीक है, सो आफ्टर राइटिंग दिस प्रोग्राम I will download the program and I will. Otherwise, I will take some others. पेमेंट और किसने किया था? Okay, so what is the procedure is, first you connect your CPU to the computer. So second step is go to device manager. देखो अभी ये कुछ तो प्रॉब्लम है इसका, right? It's saying that it has detected something, but then it is also saying that कुछ number उसने assign किया, COM3 something it has assigned. So it is detected, it has assigned some number. Let's see whether it's working or not. Let's go to the program. Then आप no, ये डिटेक्ट नहीं हुआ, एक्सप्लेनेशन आ रहा है उधर। Okay, now it is detected COM3. COM3 is there. This fellow supports so many boards. Okay, this compiler supports so many boards. Okay, see how many boards it is supporting. Understood? So many boards. But I am interested in ESP32. Okay, right now I'm interested only this board. That is the first thing. I will explain you all these things slowly. But anyhow, so after that, what I'm supposed to do? Compile the program. So that is the first button is compile the program. Second button is download the program.
Okay, so done compiling means your program doesn't have any syntax errors. Now I want to download the program. If you click the second button, it will compile as well as download both. Okay, so now the flash is getting burned. No, this is a built-in LED. Matlab on board only it has a. We didn't connect externally anything. On board only it has a. So whenever you say built-in LED, this LED will be blinking. Understood? Okay. So this has what? CPU, that USB bridge to connect it, and CPU consists of program memory, flash memory, everything. On top of it, why I am giving this CPU right now for to begin with is because this has a Wi-Fi. This is the Wi-Fi. So if you have a Wi-Fi, then the sky is the limit. You have all IoT, internet, cloud, so many things you can do. All those attractive applications we are doing that we can do it. But then that's what I said. Let's not be attracted toward those fancy things. First, our focus is a good coder, good programmer. So let's practice only C language. I will give you some examples from my side, but I will also invite some experts. I want them also first concentrate on teaching C language in embedded and implementing on the target device. So few things I will give you. What I am giving, I will note it down. Every time I will give you new things. You will, whenever you come here, you solder it, test it. Take your own time. Don't be in a hurry. When you are Friday, if you can come, or Saturday or Sunday, anytime. But जो वीक का जो माउंट होना चाहिए था आप उतना सोल्डर करके रखो. बट रेस्ट प्रोग्रामिंग वगैरह आप यहाँ भी कर सकते हो, आप घर पे भी कर सकते हो, वेरे भी. ओके. Okay, so let me end the session, those who are online. Okay, so that's all from my side. If there are any questions, you can ask those who are online. Okay, so if there are no questions from online, let me end the talk. Yeah, sure. I will share the slides, definitely.
Yes, yes, you can do that. Yes, Siddharth, you can do that. No, embedded C only, but then we will begin with Arduino first, then we will go for embedded C, more complicated C. No, you can, as soon as you pay it, you let me know. You can collect it from college or I will courier it. Yes, yes, sure. Okay, so if you have any questions, you can WhatsApp me. We will discuss. No problem. Okay, then. Bye bye. चेक करो अपलोड करें